Hello students, we are conducting MCQ based on case scenario. So this case scenario is based on a single or multiple contracts under in case 115 which is related to the step number 2 identification of performance obligation. So let us see data given in this scenario. We are given that so Airtel Limited, a telecommunication company, is engaged in providing broadband internet services along with handsets, modem, router, and voice call and data services. Customers can buy the products such as handset, modem, or router from the Airtel company or from any other vendor. The handset can be used by a customer to perform certain functions, for example, calendar, contract lists, email, internet access, and accessing apps via Wi-Fi and to play music or games. इसमें से जो आपके प्रोडक्ट्स हैं हैंडसेट है उसको आप इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं मोडेम और राउटर जो है आप मार्केट से भी परचेज कर सकती हैं एंड इट इज आल्सो गिवन दैट देयर इज a secondary market in which handsets modem and router can be bought or sold for amounts greater than scrap value. So Airtel company has entered into different contracts with different customers during current financial year as given below. अब डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको दिए हैं उन्हीं के बेस पर आपके डिफरेंट एमसीक्यू हैं. Number 1 is given contract with the customer X. So it is given that the company provides modem and broadband internet services to customer X along with voice call services. The company has various plans where it provides either modem or broadband services or voice call services. उसमें कंपनी ने 3 प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए हैं कस्टमर को एंड वी हैव टू डिटरमिन MCQ 1 में determine how many performance obligations does the Airtel company have with the customer X. So let us see this one, number 1. So MCQ number 1. So here a company has entered into contract with the customer X and it is given that company has provided first of all modem is provided and broadband services which are also called internet services and further it is given that company will also provide this voice call services. Now we are asking how many performance obligations are involved in this contract with the customer. इसमें देखो modem you can buy from open market also, internet services are also independent, it can be used on any modem and voice call services are also independent, they are not integrated and even these products can be available from open market. It means all these products they are not interrelated और कोई भी इसमें इंटररिलेटेड नहीं है. तो मोडेम को आप मार्केट से परचेज भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं एट वैल्यू इट इज गिवन मोर देन स्क्रैप वैल्यू. इट मीन्स सो देयर आर 3 सेपरेट परफॉर्मेंस ओब्लिगेशंस. इसमें 3 सेपरेट परफॉर्मेंस ओब्लिगेशंस मानी जाएंगी इन द कॉन्ट्रैक्ट. So now you can see which option is correct. Answer is option number B is correct. So next we have the second contract. This is contract with customer Y. So in this case it is given that a company enters into a 2-year contract for internet services with customer Y. Y also buys a modem and a router from the company and obtains title to the equipment. And the company does not require customers to purchase its modems and routers and will provide internet services to customers using other equipment that is compatible with the company's network. तो उसमें 3 प्रोडक्ट्स आपको देखो मेंशन किए हैं. नंबर 1 इज अवर मोडेम यानी कि राउटर एंड इट इज इंटरनेट सर्विसेज. सो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर वाई सो कंपनी प्रोवाइड्स 3 प्रोडक्ट्स. तो 3 प्रोडक्ट्स आपको मेंशन किए हैं. तो नंबर 1 दिस प्रोडक्ट इज अवर मोडेम यानी कि जो राउटर. नंबर 3 इज इंटरनेट सर्विसेज. और आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में मेंशन किया ही है कि मोडेम एंड राउटर आप मार्केट से भी परचेज कर सकती हैं. और फर्दर इसमें भी आपको मेंशन किया है दैट कंपनी डज नॉट रिक्वायर कस्टमर को परचेज मोडेम एंड राउटर्स फ्रॉम द कंपनी सेल्फ एंड इंटरनेट सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है इट कैन बी यूज्ड ऑन अदर इक्विपमेंट विच इज अवेलेबल विद कस्टमर. तो इट मीन्स मोडेम एंड राउटर दीज आर अवेलेबल इन मार्केट and it is also not necessary to buy from the same company.
So company providing mainly internet services, it means these are independent. So we can say that all these three products they are not interrelated or dependent. So they are independent, so therefore there are three separate performance obligations. So here we have three separate performance obligations in the contract. There are multiple contracts. So in this contract with the customer Y, you can say which option is correct. So answer is option C is correct. So next we have contract with the customer Z. So in this case, it is given that company enters into a contract with customer that includes the delivery of a handset and 24 months of voice and data services. इसमें हम दो प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं कस्टमर को, हैंडसेट और एक है वॉइस एंड डाटा सर्विसेज. एंड इट इज गिवन कंपनी रेगुलरली सेल्स इट्स वॉइस एंड डाटा सर्विसेज सेपरेटली टू कस्टमर्स. So through renewals and sales to customers who acquire their handset from an alternative vendor means retailer. तो इट मीन्स अब जो हैंडसेट है वो आप मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं. इवन कैन कंपनी विल प्रोवाइड दीज सर्विसेज जो आपकी वॉइस एंड डाटा सर्विसेज हैं. तो नाउ देयर आर आस्किंग एमसीक्यू. सो डिटरमिन हाउ मेनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डज योर कंपनी हैव विद कस्टमर जेड. तो सिंपल केस है. इसमें देखो आपको मेंशन किया है कंपनी है जो प्रोवाइडेड, कंपनी प्रोवाइड्स सो हैंडसेट नंबर 1 हैंडसेट and second company providing voice and data services. And it is given that handset can be purchased from open market. So this you can buy from open market, or even if you buy from company then it can be used independently also for different functions जो आपको मेंशन किए हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में. तो आप इसके थ्रू वाईफाई की एक्सेस ले सकती हैं, लाइक ईमेल कर सकती हैं, प्ले म्यूजिक कर सकती हैं, गेम्स प्ले कर सकती हैं. And it means this handset can be used independently. So it doesn't require voice and data services in that case. So it means we can say that these are two separate performance obligations. So in this case, the contract has two separate performance obligations. So they are not interrelated with each other. So it means there are multiple contracts. Now you can see which option is correct. In this case, answer is option number A is correct. So in this lecture, we have discussed case scenario based on single or multiple performance obligations, which is step number 2 of IND AS 115. फर्दर टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन फर्दर लेक्चर्स. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.